Mumbai for decades. What does Radio City Mumbai Icon Award mean to you personally? Oh, well, it means the world to us, to be honest, because we've been listening to Radio City since I was a kid, I think. And to be getting an award from Radio City is a big validation. Radio City means coming to Mumbai. That's the first time I heard of Radio City, and I was listening to Radio City. And because I came alone, Radio City was my companion. You've been receiving numerous awards back to back, and yet another year brings recognition for you, sir. How does it feel? It feels great. So is Batulika. I think her performance in IC 814 has been celebrated a lot and totally deserving. No, but let's talk about you. You have had. Yeah, I think God's been really kind that last year was such a wonderful year for me. Films like Shrikant got so much of love for my performance, and the film did well at the box office. And then Stree 2 came and broke all the records possible, and then got so much of love. Then Vicky Vidya, Mr. and Mrs. Mahi, varied genres, different characters, but that's what I want for every year, to play challenging parts. Your fans love both of you so much. If you had to send them a special shout out in the true Radio City style, what would you say? Oh, thank you so much, guys. We love you too, and thank you for being so kind. Thank you for supporting us. We support each other, we love each other, but together we love you guys. मैम बहुत जल्द हमारा फुले आ रही है, क्या कहना चाहेंगी? ऑडियंस काफ़ी बेसब्री से वेट कर रही है. नहीं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक ट्रेलर लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छी तो होने ही वाली है. She's amazing in the film. I've seen the film. भूल चुक माँ, yes. तो उसमें क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताना चाहें? बहुत मज़ा होने वाला है. It's a very unique concept. It's a family entertaining film. 29 की हल्दी थी, 30 की शादी थी, पर हल्दी में अटक के रह गई जिंदगी. 30 आई नहीं, आके नहीं दे रही है. Thank you. What does Radio City Mumbai Icon Award mean to you personally? Look center. Sorry, I have to look in the center and talk to you sideways. Okay. Well, it means a lot. I think any validation for your performances as an actor always means the world. And from Radio City, such a reputed platform, it means. Winning a Mumbai Icon Award means leaving a lasting impact. What's the legacy you want to create, Radha? To just be remembered for all the stuff I do. Maybe even hundreds of years later, people remember my performances, I guess. If you had to send your fans a special shout out in the true Radio City sense, what would it be? What is a true shout out in Radio City sense? Rag Rag Mein Daudi City. Oh, well, Rag Rag Mein Daudo Phir. Thank you, Radha. To describe tonight's energy in one hashtag, what would it be? Ooh, what is your saying? What Daud ke kya? Rag Rag Mein Daudi City. Rag Rag Mein Daude City is happening inside that place, and here with all our paps who are very enthusiastic always. किसी का phone बज रहा है. Congratulations on being recognized as Radio City Mumbai Icon. How does this moment feel? Oh, it feels wonderful. Don't confuse like that, then I forget what I'm saying, train of thought. But no, it feels great, I think. Any sort of validation that you get, and one like this is very, very special. Especially like I got mine for Rita Sanyal. Rita Sanyal देखा आपने? जिन्होंने नहीं देखा आपने, उसके लिए मिला. Thank you. What's one mantra that's kept you going, Anna? There's no one mantra. I think if you have one mantra, you can't keep going. You have to have a different mantra maybe every single day, because this industry is very overwhelming with the ups and downs. So a different mantra every day, I guess. What's something you'd like to say to the Radio City Mumbai team? You guys rock, yeah. Your energy always. Even when I come to promote a film like to the office or even here live, and I think because you guys are all like all the RJs are hosting it, there's like impromptu energy. It's like watching a stand-up show where people are giving bad things. It's very, very entertaining. Thank you so much. Thank you. You personally. Any awards, whatever I have received up till now, whatever it is, but why I now like Radio City Awards is because they have acknowledged the presence of spirituality in a human life, and I'm connected to Maitri Bodh Parivar. On the behalf of Maitri Bodh Parivar, I have received this award, and I thank my master Maitri Dada Shriji, who's the founder and the visionary for love, peace and transformation. So I'm happy to receive this particular award. I'm really happy to receive this particular award
finally there is some recognition about spirituality and global peace and global transformation. Congratulations on being recognized as Radio City Mumbai icon. How does this moment feel? I just said that how does this moment feel? For me, it's a very proud moment to receive this award for Maitri Bodh Parivar. This is a big honor. I mean, the other awards I have received, but this is a very big honor for me. Yeah. Okay. What's one mantra, ma'am, that has kept you going? Love yourself and love everybody around. So I represent global peace, love and transformation. That is what. Kids. What does Radio City Mumbai Icon Award mean to you personally? इट्स अ ग्रेट ऑनर. बहुत अच्छा लग रहा है दैट आप लोगों ने सोचा कि मेरे क्राफ्ट को अप्रिशिएट किया जाए और इनकरेज किया जाए. तो थैंक यू सो मच रेडियो सिटी. थैंक यू. Your fans love you. If you had to send them a special shout out in true Radio City style, what would you say? व्हाट इज योर स्लोगन? रग रग में दौड़े सिटी. बस रग रग में दौड़े रिद्धि. Thank you. क्या कुछ है जो बहुत फिर भी 2-4 कोविड लगा के जल्दी पहुंचा जा सकता है, पर वो मुझे बियॉन्ड क्रेडिबल था. और पहली बार उन्होंने स्टेज पे ऐसा कुछ देखा जो भी ऑडियंस में हो रहा है. तो बहुत नेचुरल है कि आप अभी भी इवन नाउ आई एम वेरी नर्वस इतने सब लोगों को देख के. आप अभी ऐसा कुछ भी बोलोगे एनीबडी कैन क्राई, सो शी क्राइड और वो अपने को रोक नहीं पाए. तो या बट नाउ शी इज बेटर, शी इज फ्लाइंग बैक. अभी आ जाएगी. One last question. Tony, your fans love you. If you had to send them a special shout out in true Radio City sense, what would you say? Hello to all my fans, and I would love that you listen all my songs only on Radio City. And you comment feel. It feels fantastic. I think to be validated for your work is one of the best things that an actor can feel, and really glad to be present here and to get this award. What's the one thing you do to celebrate tonight? Probably going to have like a pastry because I'm not allowed that, so maybe that. The Radio City Mumbai Icon Award honors resilience, creativity and impact. What's one mantra that's kept you going? I have this thing that I keep telling people that every time you feel like giving up, lage raho. So lage raho is that one mantra. Thank you, Arun. Thank you so much. Thank you. As Radio City Mumbai icon, how does this moment feel? अमेजिंग. रेडियो सिटी एक तो कमाल का प्लेटफॉर्म है. जागरण जो इतना अच्छा फिल्म फेस्टिवल वगैरह सब काम करते हैं, और उसके अंदर अभी लगातार 2 शो जो मेरे हैं, डब्बा कार्टेल और दोपहिया, उन दोनों को ऑडियंस की सराहना मिल रही है. और उसके बीच में ये इस तरह का सुंदर ट्रॉफी मिलना तो मतलब सोने पे सुहागा है. What's one thing, sir, you do to celebrate tonight? मैं दोपहिया का और डब्बा कार्टेल का एक एपिसोड देखूंगा दोबारा से. हाँ. The Radio City Mumbai Icon Award honors resilience, creativity and impact. What's one mantra that's kept you going, sir? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो. तो वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिज़ल्ट क्या होगा वो हमारे बस में नहीं है. हम सिर्फ स्क्रिप्ट आई, उसको चूज़ किया, उसको उसमें शूटिंग में जो डायरेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका विज़न है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना, ये हमारा फ़र्ज़ है. यहाँ तक हमारी पहुँच है. उसके बाद वो कैसा बनेगा, दर्शकों तक पहुँचेगा तो दर्शकों की सराहना मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. आप फ्यूचर आइकन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, सर? पढ़ाई करो, मेहनत करो, और डब्बा कार्टेल और दोपहिया के सारे एपिसोड 2-2, 3-3 बार देखो, सीखने को मिलेगा. थैंक यू, सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. The Radio City Mumbai Icon Awards celebrate those who define the spirit of the city. How does it feel to be recognized as a Mumbai icon? I mean, I'm extremely humble about it and grateful. It means a lot because, I mean, it was a dream to come here. It was a dream to pursue Bollywood, to become an actress. And इसलिए मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मतलब मुझे एक्सेप्ट किया है और जितने सारे डायरेक्टर्स लोग, प्रोड्यूसर लोग ने मुझे मौका दिया है. मतलब आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल. सो थैंक यू. Your fans love you, Ellie.
If you had to send them a special shout out in the true Radio City यार ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, इट्स अ बिग थिंग। एंड जो सिकंदर के जो मेरे गाने हैं वो उसमें भी पार्टनर है, और कई सालों से सुनते आ रहे हैं रेडियो सिटी में, और आज यहाँ आने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। winning a Mumbai Icon Award means leaving a lasting impact. What's the legacy you want to create? मैं कौन सी लेगेसी यहाँ पे क्रिएट करूँगा? ये भी यहाँ पे आया हूँ और पहली बार आया हूँ, और मुझे कुछ अवार्ड देने भी हैं, कुछ मिलेंगे भी शायद। सो आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू। आपके फैंस आपसे बहुत प्यार करते हैं देव। अगर आप ट्रू रेडियो सिटी स्टाइल में उनसे एक शाउट आउट देना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं उनसे ये बोलूँगा कि जितने सारे गाने उन्होंने मेरे सुने आज तक और मेरे गानों को प्यार दिया है, वैसे ही सिकंदर के गाने जो आए हैं उनको भी उतना ही प्यार दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप रेडियो सिटी की स्टाइल में उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे चाहने वालों को यहाँ से प्यार करता हूँ, और रेडियो सिटी उनके गाने सुनता हूँ। एफएम सुनने में मज़ा आता है। जब भी शूट के लिए कहीं दूर जाते हैं, लोकेशन दूर होती है, एफएम ऑन रहता है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मुंबई आइकॉनिक अवार्ड 2025 मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपके जीवन में सर आपका आइकन कौन रहा है? मेरे जीवन में सबसे पहले मेरे पिताजी, उन्होंने हमेशा यही चीज़ बोली, हारियो न हिम्मत, बिसारियो न हरिनाम। तो हिम्मत जो है वही है ऑक्सीजन, और प्रभु जो हैं वही हैं टॉर्च, वही कहीं लेके जाते हैं। तो बस चले जा रहे हैं। और आपका सर लाइफ का एक मंत्रा क्या है? कुछ भी हो जाए काम करते रहो। थैंक यू। थैंक यू। आपको रेडियो सिटी मुंबई आइकन अवार्ड जीत के कैसा लग रहा है? हाँ, Sorry. We just come to opening question. Sorry. मैंने सुना नहीं। It feels amazing. Radio City is doing this for the first time, and I'm so glad that my work got recognized, and I'm standing here with this award. Feels great. What's one thing you do to celebrate tonight? Tonight I'm shooting tomorrow, so I'm going to go back home and work on my scenes. What's the message you'd like to leave for the future icons of the city? The message that I want to leave is that stay true to yourself, to the people around you, and strive and live and let live. Thank you so much. अच्छा ही करूँगा मैं आज घर जाके। आपको कैसा लग रहा है सर अवार्ड जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे पुराने दोस्त भी जो आरजेस हैं वो सब मिले, और उनसे भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई, तो आई एम सो हैप्पी। आप रेडियो सिटी मुंबई टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि जैसा वो धमाल इतने सालों से मचा रहे हैं, मचाते रहिए। Thank you. The icon of all the awards. That's what it means to me. Winning a Mumbai Icon Award means leaving a lasting impact. What's the legacy you want to create? The legacy of attending all the red carpets in the city. Your fans love you, and if you had to send a special shout out in the true Radio City style, what would you like to say? Radio City. रग रग में दौड़े सिटी। रग रग में दौड़े सिटी। रग रग में दौड़े सिटी। क्या बात है। Thank you. फील्स ग्रेट। ये मतलब सपनों में भी कभी सोचा नहीं मैंने। Congratulations on being recognized as Radio City Mumbai icon. What's one thing you'll do to celebrate tonight? I'll call up my parents and share this wonderful news with them,
एंड या मतलब टैप माई सेल्फ ऑन द शोल्डर कि ये भी एक मतलब अच्छा अचीवमेंट है. या सो या आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. एक्चुअली मुझे ये अच्छा लगता है कि आई एम रिसीविंग दिस अवार्ड फॉर माई डेब्यू इन मराठी सिनेमा फॉर माई फिल्म इलू इलू. एंड या इट्स अ वेरी स्वीट रिकग्निशन. मतलब ये मुझे लगा नहीं कि मतलब एक अवार्ड मिलेगा मुझे. सो थैंक यू. अरे गाइस बोलो. So it's an incredible feeling. सबसे पहले तो बहुत सालों के बाद मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी मेहनत के लिए. तो ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी पूरी टीम की है. ये it's for my mom. It's because of Sanjay sir. And again, I want to dedicate this award to my dear friend who unfortunately passed away last year, to Tushar Tulsidas Nayak. So this award is for you. Thank you. What's one thing you do to celebrate tonight, Actually, I just landed from a 24-hour flight, so I think I'm going to go and sleep it out. Winning a Mumbai Icon Award means leaving a lasting impact. What's the legacy you want to create? The legacy that I want to leave back would be that all of us can make it. We just have to put our heads down, focus, and never give up. In the most dire times, in the times when everything seems dark, don't give up. Right? That's the legacy that I want to give back, and if I can inspire even one person, I guess that's the blessing God gave me. Important to me personally because everybody listens to this, and if they are honoring me, it's like a win-win. Winning a Mumbai Icon Award means leaving a lasting impact. What's the legacy you want to create? I didn't get it. What's the? Winning a Mumbai Icon Award means leaving a lasting impact. What's the legacy you want to create? Well, yeah, my brain doesn't work. That's okay. Tum, your fans love you. If you are to send them a special shout out in the true Radio City sense, what would you like to say? I would just tell them to keep the love coming because that is what keeps me going. Yeah. Thank you. Thank you. This is my first award this year, and really get some award. I'm really honored to get this. If you have to describe tonight's energy in one hashtag, what would it be? Energy. I don't know, it's a feeling. Hashtag love, because I feel loved right now. The Radio City Mumbai Icon Award honors resilience and creativity. What's one mantra that's kept you going? So there's this quote which I live by is if you can dream it, you can live it. Yeah. Oh, okay. But again. No, for the answer. Okay. You can just look in Okay. the I thought you're. If you can dream it, you can live it. Thank you. Thank you. Thank you. Any memories for Radio City related हो क्योंकि बचपन में अक्सर टीवी हाँ मैं अंदर I was thinking this I was sitting inside and I was thinking कि पहले तो we used to listen to radios हमेशा और अभी there's so many other means but we still listen to the radio like so it is something that हम लोग बहुत connected है and the other day we went to a birthday party and we were coming back and जो वो था 2 songs from Big Boss played in the car and we were like yay. जो हालांकि बिग बॉस से निकलने के बाद कई ऐसे कपल हैं जिनके रोमांटिक सॉन्ग भी आए हैं फैंस आपका और करणवीर का सॉन्ग का वेट कर रहे हैं कोई ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि सॉन्ग अभी तो नहीं बट दूसरे क्या अदर थिंग्स आर हैपनिंग तो उसमें टाइम लगता है ना तो साथ में ही है दोनों नॉट रियली सॉरी बट मे बी आगे चल के फ्यूचर में होगा है ना ओके थैंक यू सो मच थैंक यू